Good evening, guys. So we're going to start a series about interviewing our subscribers and followers, like anyone who is good at anything. ऐसे कुछ नहीं कि आपको only trading करो या फिर farming करो. If you are doing anything in life and you are happy about it and good at it, and आप successfully अगर कोई एक चीज़ आपने किया हुआ है and if you want to get featured, let me know. मैं नीचे में एक फॉर्म का लिंक दे देता हूँ. Go ahead and fill this up and we can discuss, and then maybe we can schedule to make a podcast with you and let people know about you. So आज we are going to discuss with one of our follower who has been following for a very long time. हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भी he is a member and has been very active member. So उनका PNL उन्होंने टेलीग्राम पे शेयर किया होता है. उसमें बहुत सारे ग्रीन डॉट्स थे. लाइक पीपल वेर लाइक इतने सारे डेज प्रॉफिट्स कैसे हैं. सो उनके साथ हम अपन पूरा डिस्कस करेंगे वो क्या स्ट्रेटेजी यूज करते हैं, कैसे इतने सारे ग्रीन है, कैसे ही बहुत कम रेड्स है. एवरीथिंग इज गोइंग टू डिस्कस विद अस. सो लेट्स गो अहेड एंड स्टार्ट द डिस्कशन राइट नाउ. ओके, सो हमारे साथ है रूमी भाई. बट यू नीड टू टेल मी योर नेम. सो हाउ डू यू प्रोनाउंस योर नेम? जर्जिस और हाउ डू यू टेल? जर्जिस. ओके, सो कहाँ से हो आप? वेयर आर यू फ्रॉम? I'm from Mumbai. टेल पीपल समथिंग अबाउट यू सो पीपल गेट टू नो अबाउट यू, क्योंकि आप तो बहुत दिनों से हमारे ग्रुप में भी हो. सो लोगों को ही मालूम चलना चाहिए कि कौन है ये भाई साहब, क्या करते हैं. सो व्हाट डू यू डू? Yeah. So I'll just introduce. Yeah. So my name is Dr. Zuxis Rumi. I just finished my MBBS and given my NEET PG post-graduation exam. ओके, And yeah, so now, and I'm a part-time options trader. पार्ट टाइम ऑप्शन. बट हाउ डू यू फाइंड टाइम? क्योंकि टाइम तो मतलब आप अगर MBBS करते हो देन आपका टाइम तो पूरा उसमें चले जाता होगा. हाउ डू यू फाइंड टाइम? Yeah. So I was actually studying for my post-graduation exam at home for a year. So then I could remove some time. ओके. Or I was not working that time. Yes. ओके 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 ओके. सो आप ट्रेडिंग कब से क्या चालू हुआ? ट्रेडिंग में कैसे घुसे? कौन बोला कि ऑप्शंस ट्रेडिंग कोई चीज़ होता है? व्हेन डिड यू गेट इन? Yeah, so actually then when I had finished just my MBBS and before starting the internship back in 2021, so I had Okay. a few months period free. ओके So then that time I'd seen some Instagram ads of some traders Okay. posting big profits. So obviously I got lured in and seeing. I took some courses also worth 30,000-40,000. Oh but it wow, was okay. of no So use. you have already spent a lot of money on courses then. Yeah. Yes, around 40. Okay. But none of them was any helpful. Damn bad. So COVID के time में were you into investing trading, or like COVID के time you had no idea about all this? No, like actually, since bachpan se, like my dad has always told me about mutual funds and also that Okay. era of Okay. stocks was always there. So, but I started options back in 2021 in June only, Okay. May, June, and I used to do, but I never made a big loss ever. That's the positive. Yeah, actually, then I started, but it was not successful. What those guys thought they make profit, but we could not make, So Big it was- profits. Then I started, big profits. Big profits. Definitely. Then I started, then I was going to quit Ah. in because I had decided mentally that one thing I decided, I'm not going to lose big money. That I had fixed it. But then my dad always told me that you can try, don't worry about anything, keep trying. So then I tried, and from that month, I can say from August 2021 till today, I never lost more than 2,000-3,000 bucks. मतलब big loss लेने का है, big loss नहीं लेने का. Never. Yeah, yes. वही सबसे बड़ा तो प्रॉब्लम वही है ना. तो वंस यू टेक ए बिग लॉस देन उसके दिमाग में चलता रहता है लाइक हाउ आई एम गोना रिकवर दिस थिंग, एंड वो रिकवरी के चक्कर में अगेन वो लूप में घुसते पीपल एंड अप लूजिंग अगेन मोर एंड मोर मनी. तो हाँ, लोग स्क्रीनशॉट देखे, थंबनेल देखे होंगे कि कैसे इतना सारा ग्रीन दिख रहा है. तो हमारे रूमी भाई ने मेरे साथ शेयर किया हुआ था. लेट मी जस्ट शेयर द स्क्रीन सो पीपल कैन एक्चुअली सी. So what I'm gonna do is I'm gonna mask the URL and the figures, नहीं तो लोग पीछे पड़ जाएंगे. क्योंकि the problem with people is if you show them big profit, उनको लगता है कि नहीं इतना बड़ा प्रॉफिट कैसे है, कुछ तो स्कैमर है, नहीं तो फ्रॉड है. अगर छोटा प्रॉफिट दिखाओ तो उनको लगेगा कि इतना छोटा, तो उससे अच्छा लोगों को कभी प्रॉफिट एंड लॉस का फिगर्स कभी नहीं दिखाने का है. लोगों को इमेजेस दिखाओ बट प्रॉफिट एंड लॉस का फिगर्स कभी मत दिखाओ. ओके, सो दिस इज द पेज. सो मैं इसको अभी रिफ्रेश कर देता हूँ. सो इफ़ वी सी दिस इज़ फ्रॉम अगस्त 2023 टू अगस्त 24, तो एक साल का है, क्लोज टू एक साल का ही है. सो करेंट Zerodha allows you only 1 year. ओ 1 ईयर का ही आता है क्या? ओके. सो लास्ट 1 ईयर का ही Zerodha ज़ीरोधा में में दिखा 1 year सकते हैं. ओके.
सो लॉन्गेस्ट स्ट्रिक 17 डेज 2024 मई से लेके अप्रैल तक, उसके बाद मोस्ट प्रॉफिटेबल डे जून 23, FNO यहाँ पे दिखा रहा है, ये है उन भाई का नाम। एंड देख सकते हो कितने सारे ग्रीन 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 ग्रीन, जो रेड एक ही दो शायद डार्क रेड है, नहीं तो और सब कुछ ग्रीन 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 ही है। चलो So परफेक्ट। when I go in the concepts, I will tell you about the reds also. Actually, these are not reds. I will okay. tell you. Actually. सो इतना पहले तो बता Yes. कि इतने सारे ग्रीन और इतने बहुत कम रेड कैसे हुए? I'd always thought about that there is, I treat it like a business, you know. It has to be something that daily it should not go too much in negative. You know, like everyone thinks that making a loss means, oh, okay, you learned something, you will learn something. And they make loss their virtue. And they think that, oh, they are learning something. But, you know, I don't believe in that. You should keep taking so many losses. You should know when to Stop. change, switch gears. If this is not Stop. working. When to stop? Yes, that's the main thing. When to stop. वही होता है ना, तो व्हाट प्रॉब्लम हैपन विद पीपल इज दे जस्ट कीप ऑन ट्रेडिंग। सो मतलब जैसे होता है ना, ओवर ट्रेडिंग रुकनी नहीं चाहिए जैसे मैं कहता हूँ। तो लोग क्या करते हैं कि वंस दे स्टार्ट ए ट्रेड, सो इवन इफ देर इन प्रॉफिट्स दे फील लाइक अरे अभी तो ओनली 1 घंटा ही हुआ है, वी स्टिल हैव सो मेनी आवर्स लेफ्ट, why are we stopping to trade now, we have like whole day to trade, let's enter some more trades। तो और 2-3 ट्रेड मारते हैं, उसके बाद जैसे लॉस होता है उनको लगता है कि अरे अभी तो ग्रीन था, अभी रेड हो गया, चलो इसको ग्रीन करने के लिए ट्राई करते करते अगेन थोड़ा बड़ा लॉस, तो वो दिन खत्म। नेक्स्ट डे अगेन दे कम बैक एंड दे स्टार्ट ट्रेडिंग विद ए नेगेटिव माइंडसेट कि कल का जो है उसको रिकवर करेंगे एंड आज का भी लेके जाएंगे, एंड दिस इज हाउ इट कीप्स ऑन हैपनिंग। रेड 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 आते जाता है। उसके बाद यस, सो लाइक व्हाट स्ट्रेटजी डू यू यूज? Yeah, so it's a mix of both option buying and selling. Like you can say 70% selling, 30% buying. I'm a very opportunistic person when it comes to buying. I don't always buy every day. You know, there's one strategy which I'll discuss right now. It's gamma squeeze strategy. So in a year, I only take 12 trades. That's it. Only 12 trades for option buying. And in this, at around 1:30 p.m. We put a SLL order, stop loss limit order, and at around 1:30 we sell means we buy the call and buy the put. Like if it should not be more than 50-100 points out of the money. And premium should be that time it should be quoting around 3-4 rupees. And we put a SLL of 6 up and 6 down. So, but this is on which index? Nifty or Bank Nifty, which index? So the concept is it's 12 trades a year. Concept is about Nifty only Nifty. Because the stock expiries happen on the end month of the Thursday, where there's a Nifty expiry. So the concept is the gamma squeeze because all the stock options are also rolling over to next month. The futures are also rolling. So therefore, a one-sided move always comes after 1:30 on a Thursday. So I always put a SL limit on both the sides. And one side will trigger, other side तो 0 हो जाएगा, तो वो तो trigger ही नहीं होगा। So उसका I just leave it and 1:4, 1:5 types I try. तो वो only for the expiry day then? So that's the only expiry day हुआ? That's 1 month, monthly expiry last day. That's the buying because I don't do buying that much. I'll more opportunistic. So basically you are doing buying only once in a month, and that is also पूरा last वाला expiry में हो रहा है. Yeah. Month end expiry when stocks का expiry. Or whenever, yes. Okay. So that is the only buying part. Then selling part में मतलब rest of the year you are only selling. Every day you are selling. Yeah, like recently I did a buying. So one more concept I have. It's a very good one. Everyone should actually try this. So when अभी elections का हुआ, वो elections का हुआ और वो निफ्टी गिर गया, means फिन निफ्टी सब like 9-10%. फिन निफ्टी में there was the circuit limit for futures it hit. The circuit limit didn't hit, but for futures circuit limit hit. Whenever there is a bounce back, I always say, so everything always comes towards the mean. The mean reversal always comes. So my concept is if there is nearly hitting a circuit, just buy the future. I bought one future in Fin Nifty. And rest is history. That is on June 4. It went from June 4. Yes, I bought one lot. Yes. In buying, I always do less. Okay. तो फिर selling में क्या करते हो? हर दिन if you are doing selling, so what strategy do you use for the selling then? So selling, I mainly use 2 strategies. One is calendar spread and one is covered calls. कैलेंडर स्प्रेड, बट उसको क्या आप एवरीडे यूज करते हो? बट वो तो एक मतलब टाइमलाइन रहता है ना, यू हैव टू कीप द ट्रेड फॉर वेरी लॉन्ग टाइम.
See, calendar spread mainly when you do budget or some event based or Okay. something of that sort is there. So we just take the calendars the dur ka week ka we buy the same strike. Hmm. Say market is at 23,500, we buy 24 and 23 call put, and we sell a week before. So and before the like if it's first Feb is So it's the positional. our budget. So yes, so that's the only positional. for me. Positional. But And intraday में क्या कर रहे yeah, हो? so yeah, intraday mainly I balance my calendar spreads in which in the covered call. So I have some stocks. Okay. Like 50% of my portfolio is stock, 50% is cash for the option buying or whatever. Okay. So if say I have 700 shares of, just an example of TCS, just an example. So means I can do 2 lots. Okay. So I always like if it's at I think TCS at 4,000 something, and I always sell a little out of the money. Okay. And I keep collecting that premiums and I keep adjusting them. Okay. So daily I get, and it's like it's fully covered. So every day तब so तो आप overnight वो also ये भी कर रहे हो ना, adjust कर रहे हो तो then you are also spending more time on the charts. Yes. Then adjust भी कर रहे हो आप. No, I'll tell you one more thing. I have in my life never seen charts. Okay. You don't see the charts? I don't see at all. I don't even know right now what's the. I think it's some 50,000. I don't see, because there's a concept. I mainly see the option chain. So in daily when I do directional selling. Okay. So I come at the day like before at 9 o'clock. I just see the market and I see. I mainly always have a bias towards selling a call. Okay. हाँ. I always have a most bias. मेरे भी वैसे ही है कि C को sell करना है. Yeah. C को sell करना है कैसे भी, you have to see. If it's a gap up, then तो I'll 100% sell. Gap up 1-2% तो बेचने का ही, call तो बेचने का ही है. And I always sell half quantities. Like I say, I use 30-40% of the quantities. Okay. Then if it's stop loss, then people if they sell call put just blindly. Straddle नहीं तो strangle. I don't do that. Okay. I don't ever do. I only do one side. I either do a bear Naked. call or a bull put. Directional. I start the day like that. Yes, I always do directional. So say I sell around 40 points stuff, say in Bank Nifty. The best part is I always take a tight hedge, 10 rupees का. Okay. So that अगर DK भी suppose मिल गया, वो hedge on रखने का 330 का, निकालने का नहीं कभी hedge. Okay. So that there's always a chance of a 0 for the hedge. कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा. कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा. नहीं, जैसे आपने कहा कि यू आर एडजस्टिंग एज वेल, तो अगर आप एडजस्ट भी कर रहे हो वही वाला, लेट्स से यू हैव सोल्ड वन सी एंड लेट्स से वो एसएल हो गया, उसके बाद यू आर एंटरिंग इन फुल लोड पे आप एंटर कर रहे हो, देन उसको एडजस्ट भी कर रहे हो, तो डू यू स्पेंड लाइक हाउ मेनी आवर्स डू यू स्पेंड ऑन द मतलब ट्रेडिंग देन इन अ डे? सी एक्चुअली आई डोंट स्पेंड मच. नॉर्मली व्हेनेवर आई put I try to mainly put it at 9:15, like till 11 o'clock. Mainly we can come to know how's the day. And my thing is such, I first deploy 30-40%. Okay. Then I deploy 60-70%. Okay. And then I start adding the puts. If the call is, the put is already added in the second session. First I make a bear call. Then in the second session, I will add a small put down. Okay. I'll sell the put. Okay. And then I'll keep rolling the call. People always bring the put up. That's a very dangerous thing. I never bring the put up. You keep it there, okay. I always keep my put there. Okay. I keep the put there. Let it die worthless. जाने दो. But I adjust only the call. Call को So adjust that's होता the होगा. thing. Okay. And calendar covered call में तो अच्छा ही रहता है. हाँ, कुछ ना कुछ प्रीमियम तो मिल ही जाएगा. हाँ वही, अभी TCS went 6-7% up, तो अच्छा प्रीमियम मिला. हाँ, कुछ ना कुछ प्रीमियम तो मिल ही जाएगा. ऑलराइट, तो बाइंग सेलिंग आपने वही कहा कि बाइंग यू आर ओनली डूइंग लाइक क्लोज टू ओनली वंस इन अ मंथ, सो इट्स लाइक 12 टाइम्स इन अ ईयर एंड सेलिंग ऑलमोस्ट एवरी डे. एंड उसके बाद आता है कि यस, सो लाइक डू यू ओनली डू ट्रेडिंग और डू यू इन्वेस्ट एज वेल? Yeah, and I just wanted to add one point. So for everyone, they should always study the Greeks. हाँ. Like in option chain, when I see, why do I take so when it's at the money say 23,500 and I see the OI build up. So beyond the OI build up, I always see that if the OI build up means the OI is always made up of sellers, right? So then if that is getting knocked off, means there's going to be a spike. So according to the option chain, I always keep adjusting. I never see the chart. Okay, उसीलिए कह रहे हो you are not seeing the charts. Yes, and one more thing is that people should not only theoretically know about the Greeks.
the actual concept is with the delta and the gamma. So if a delta is 0.1, say out of the money is 0.1 and at the money is 0.5. So 0.5 will maximum become 1 in the money. उससे if तो नहीं it's होएगा. gone against you. So that acceleration is not that much from 0.5 to 1. But if you sell a very OTM one, that acceleration from 0.1 to 0.5, बहुत जल्दी it will be 5 times. हाँ. So that's why people who sell far out of the money, like say 10 rupees and all, that becomes very dangerous. हाँ, immediately So spike आ this is जाएगा तो what I फिर would गया, like बड़ा to- लॉस लेके जाना पड़ेगा. खत्म हो जाएगा सर. खत्म हो You know, जाएगा. you lose many days का पैसा. वो बहुत लोग पहले करते थे, like they just simply come with lot of money and बहुत far out of the money को Yes. सेल करके बैठ जाते, कुछ ना कुछ मिल जाता था, बट उसके बाद ऐसा ऐसा स्पाइक आया कि उनका अकाउंट भी वो खाली करके चले गया मार्केट. Yes. हाँ, तो द क्वेश्चन वाज कि तो आप ओनली ट्रेड कर रहे हो या डू यू आल्सो डू इन्वेस्टिंग? Yes. So it's the story has begun with mutual funds only. Okay. So my dad has always taught me mutual funds back like to 1-2 decades back. He used to always tell me about, we used to always discuss everything about stocks. Okay. Full day our discussion like that. ओके. तो घर में like, ही yes, मतलब so all घर में the- ऑलरेडी ये टॉपिक ऑलरेडी पहले से है. My Not dad bad, was not only bad. always taught So me. now about like how do you maintain the risk reward कैसे maintain करते हो? Because you are saying that Yeah, you are so doing it's- directional naked selling, right? hedge कर रहे हो ना आप? Hedge, tight hedge. Okay, tight hedge है. हाँ, तो risk reward कैसे maintain हो रहा है? See, first of all, I would like to tell everyone that have 2-3 brokers. You have to have Okay. 2-3 brokers, like your Dhan is there. So, we should have 2-3 brokers, because if your BSC stops working, your stop loss is also not going to happen, nothing's going to happen. You have to take an opposite position and tight hedge. Like, say you are taking sold 50,500. Your hedge should not be 52, 53. It should be tight. So worst case scenario, you lose only the 500 points का maximum into the quantity size. मतलब So tight बहुत hedge दूर वाला hedge नहीं helps- करने का. नहीं, the people take बहुत दूर का hedge just for sell extra. Just for the margin. ऐसा नहीं हाँ. करने का. Just for the margin. Okay, तो No, आप पास that- का yes. ही hedge बनाते हो. So that already automatically maintains a good, you won't go a big loss. हाँ, won't कोई happen बड़ा लॉस पे actually जाएगा ही नहीं. ever. करेक्ट बड़ा लॉस पे वो जाएगा ही कभी नहीं. होगा ही नहीं. करेक्ट. Yes. तो ये तो And हो I गया always हमारा 1:2, 1:2. 1:2 में बंद, ट्रेड बंद. Like, like say I won't never wait till that 40 rupees becomes 0. हाँ, 10 पे निकाल दो. हाँ, पूरा तो वेट करने का 10 कोई पे फायदा भी निकाल नहीं दो. है. 10 पे निकाल दो. Yeah. उसके बाद I आ गया always do that. And क्वेश्चन hedge रखो. I keep my hedge. Never End तक. remove the hedge. एंड तक Hedge 330. end तक, because because it's like that gamma squeeze strategy only, right? Like people buy the OTMs just. So if you have an OTM, you have already taken enough credit. You have gotten credit. You may get a spike. कुछ ना कुछ तो If मिल ही you have जाएगा enjoyed एंड the तक. credit. करेक्ट. हाँ, कुछ मिल सकता है. उसके बाद आ गया कि हाँ, यू सेड यू आल्सो ट्रेड इन यूएस मार्केट. तो यूएस मार्केट्स में क्या ट्रेड करते हो? So the concept is, first of all, as a resident Indian, we cannot trade, obviously. But family accounts Okay. I'm using. Okay. So from that I can drive the opportunity for that. And in US markets, the unique, you asked me which indexes. So I use the Nasdaq and मतलब आप मतलब कोई S&P 500. रिलेटिव है, यू हैव सम रिलेटिव हु इज स्टेइंग इन द यूएस एंड Yes. उनका अकाउंट वहाँ का है, आप उसको Yes. यहीं से हैंडल कर रहे हो, वहीं से मैनेज कर रहे हो, राइट? इट्स नॉट समथिंग लाइक यू आर Yes. ऑपरेटिंग योर ओन अकाउंट ऑल द वे फ्रॉम इंडिया यूएस का अकाउंट, करेक्ट? We cannot do that. In Yeah, India, we India में तो cannot है do ही that. नहीं. Like India you में है can ही do नहीं. because हाँ. you are. दुबई Yeah, में you तो can है. do because you are in Dubai. हाँ, Yes, इंडिया में you तो can है do. ही नहीं. इंडिया में So है ही नहीं option. actually, so the best part of US is daily, everyday index. Daily है. दिल्ली, ओके. ओ हर दिन. Daily. Every index, every day. Every index, every day. ओ ओके. And you don't need 50% cash, 50% margin. Like in India, you need 50%. Say you have whatever money. Say you have 10 rupees. So you need at least for option selling, you need 50% cash collateral, हाँ. 50% stocks. Your what? अपना portfolio है, पड़ा हुआ है portfolio उधर. उसको देख haircut करते हैं 30% they cut. Say if you have 100,000, you will get $70,000. Okay. So accordingly, so you can trade. So that's technically. So there I sell the far OTMs or whatever. Okay. It's a good amount, good money you can get, and
obviously you will have to monitor. तो वहाँ पे कैसा एक्सपीरियंस है and यूएस adjust मार्केट्स में? accordingly. कैसा एक्सपीरियंस है? लाइक इंडियन मार्केट में तो इफ यू सी द चार्ट्स इट्स मोर लाइक कि बहुत लोग मैनिपुलेट करते हैं बड़े पैसे वाले. तो यूएस में हाउ डू यू फील? लाइक डू यू फील एनी काइंड ऑफ मैनिपुलेशन और इट्स लाइक गुड गोइंग? See, that's why I never see that way in India, the charts. But in US, it's not at all, I can say, manipulated because there's a lot of volumes and I think it's pretty fine. Other than we should just not trade on the Fed meeting. हाँ, न्यूज़ डे. Those days I don't trade. ओके, तो फिर वो दिन उनका फिर टाइम पे आपको रहना पड़ता है. जैसे इंडियन मार्केट का टाइम्स यू आर एनीवेज सिटिंग एट द चार्ट्स और द ऑप्शंस चेन इन द मॉर्निंग. तो यूएस के लिए अगेन यू हैव टू सिट इन द इवनिंग. Yeah, so actually my exam just happened few days back, so I was not doing for the US or so. But now yes, I started trading. So it's 7 p.m. right? 7 हाँ. to 1:30 मतलब Indian time. दिन में दो 7 बार PM to 1:30. यू हैव टू स्पेंड टाइम ऑन ट्रेडिंग देन. परफेक्ट. Yeah, तो it's वहाँ hard, वहाँ पे but कौन it's सा good. ब्रोकर यूज करते हो? Yeah, I use Charles Schwab and I have the Charles Schwab is there and TD Ameritrade. ओके ओके. तो वहाँ से वो मतलब लोकल यूएस रेसिडेंट ही उनके ही अकाउंट वहाँ से बस यहाँ से आप मैनेज कर रहे हो. गॉट इट. ओके. तो Yes, yes. उसके बाद क्या था अबाउट इवोल्यूशन ऑफ योर ट्रेडिंग जर्नी एंड फ्यूचर प्लान. फ्यूचर में क्या प्लान, क्या ऐसे ही आराम से करते जाओगे या मतलब क्या, व्हाट इज द प्लान? So are you planning to change the strategy or doing something? So actually, it's evolving. What I used to do back in 2021 and what I'm doing right now, it's totally like different. The crux has remained the same of selling and 70% selling and 30% buying. But I've changed. Like now you cannot do ad. First I used to do ad the money. Now it's become very scary because of not my strategy, but the glitches have really scared everyone. So at the money it becomes very dangerous. एट द मनी तो बहुत वो पैसा भी ले जाएगा. बोल रहा हूँ कि तो बेसिकली मतलब ये बस इवॉल्व हो रहा है. यू आर गोइंग टू स्टे विद द करंट स्ट्रेटेजी बट जस्ट यू आर गोइंग टू मेक चेंजेस और मेक इट बेटर, बट ऑफ कोर्स नॉट प्लानिंग टू चेंज द स्ट्रेटेजी और डू समथिंग न्यू अबाउट इट. करेक्ट? Yes, because I feel if everyone keeps jumping around with the strategy, then it's of no use. No use. And it's luckily worked for me. So how do you plan to do trading once you are like becoming a full-time doctor? So how do you plan to do trading? अभी तो आपको you are spending time on trade twice. Yeah, so that's an interesting question. Actually, in few months, I'll come to know which line in my post-graduation I'll get. Okay. In my admission will happen in few months. So it will definitely take a toll. I would like to take a non-emergency line, definitely. But yeah, I think US will be a little difficult to do. Indian one, I have actually luckily in my algo, I have put it, algo rooms I use or whatever. I have adjusted it very well. तो वो फोन से भी हो I जाएगा. just get a notification, I just adjust it. Yeah. India का हो जाएगा. US का I have not trading since so long. I've just started like 4-5 months back. Okay. हाँ, US का anyways it's मतलब very new for me. Even if you're a full-time doctor, you're anyways going to get back to home by like 6 or 7 p.m. So you can still do the US markets. और इंडिया वाला if you have the algo set तो फोन में हो जाएगा, फोन पे ही हो जाएगा. Yes. Perfect. So last question, like what are you gonna advise to the viewers, like जो नए ट्रेड कर रहे हैं या फिर constantly बाय करके लॉस कर रहे हैं, उनके लिए क्या सजेशन दोगे? Yeah, I'll always tell you that, see, for me, charts have never worked, but I won't say it will work. It won't work for others. Of course. जैसे मतलब you are someone who is seeing the options chain. आप चार्ट नहीं देख रहे हो. For me it's totally different. मैं ऑप्शन चेन नहीं देखता, मैं ओनली चार्ट्स देखता हूँ क्योंकि जो सबका स्टाइल इज टोटली डिफरेंट. मेरे को चार्ट्स समझ में आता है, आपको ऑप्शन चेन समझ में आता है. जिसको जो समझ में आता है वो यूज करे, बट एटलीस्ट सही तो यूज करे. Yes, so I would say that's what I would just suggest. If you are using chart, just always remember that if you just make a bell-shaped curve for the standard deviation, mainly it will always come to the mean. Your thing, like it's too much gap up, gap down, it will always come to the mean. Focus on that. Understand the Greeks well. So if you are an option buyer, if a 0.1 car, like don't take too far OTM, but just understand that you want either in the money or something very low delta so that you can get a spike if you are a zero guy. And a seller should and a seller should not take a very low delta. It's a very dangerous thing for a seller to take a low delta. And second thing I would advise that losing money is not a virtue. Should not consider like you're continuously losing money means मैं सीख रहा हूँ. You have to know when to cut the position as well.
वो तो Yes, लोगों को yes, जब तक वो टिल दे लूज अ लॉट ऑफ मनी, ए लॉट ऑफ पीपल डोंट इवन अंडरस्टैंड. उनको लगता है कि चलो ठीक है, चल रहा है, बाद में देख लेंगे, बाद में रिकवर कर लेंगे. बाय द yes. टाइम इट गेट्स वेरी लेट, तब तक वो कैलकुलेशन से बाहर ही हो जाता है रिकवर करना. Anyways, I think That's what. we have finished all of the questions what we had planned. अभी लोगों का अगर कुछ क्वेश्चन होगा वो पूछेंगे, तो फिर वो ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप में जब आएंगे तो उनको वहाँ पे रेस्पॉन्ड कर देंगे. Alright guys, that's it for today. Hopefully you love this podcast. If you got any question, let me know in the comments. And और वो ऐसे भी हमारे जर्जिस भाई हमारे टेलीग्राम पे है, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन होगा आप टेलीग्राम ग्रुप में जाके पोस्ट करोगे तो एनीवेज वो आपको आंसर भी कर देंगे. यहाँ कमेंट्स में डालोगे तो वो आपको हेल्प कर लेंगे. सो एंड लाइक आई हैड टोल्ड यू इन द बिगिनिंग ऑफ दिस वीडियो, सो इफ यू आर गुड एट समथिंग एंड इफ यू वांट टू गेट फीचर्ड and want me like to make your face up on the internet so that people can actually get to know like what exactly you have done in your life, how you have done it, if you're successful about it, so let me know fast. So link is in the video description, जाके fill करो and maybe I will get in touch. I will see you guys tomorrow in the new vlog.